Hi guys, welcome to exceladvisorr. Today we are going to learn how to use indirect function. If in case इससे previous video में कोई भी issue आता है, you can comment on the video or you can reach me here. So let's start the indirect function. हम कहाँ पे use करते हैं indirect function? It helps us actually to convert a text string into a valid reference. For example, you can see a short example here. In A3 I have written down B3 and in B3 I have taken a value 55. So अगर मैं use करता हूँ indirect A3, it gives me a value of 55, which means A3 में जो text string है B3, ये इसको रेफर कर रहा है B3 की वैल्यू को, यानी 55. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 65, so the value, the example results get changed to 65 because अब A3 में क्या लिखा है B3 और B3 की वैल्यू है 65. That's why. Again, if I use indirect with quotation mark, that is A3 under quotation mark, it gives me the value of that cell. It will not refer that text string into a second cell. So here you need to understand the difference between indirect A3 and indirect A3 along with the quotation mark. If it's with quotation mark, वो सिर्फ जिस चीज को हम रेफर कर रहे हैं उसकी वैल्यू पिक करेगा. quotation mark नहीं है, then it will move us toward a valid reference. This is the basic use of indirect function. Let's move toward the AND operator. Indirect function के साथ आप AND operator भी use कर सकते हैं. कैसे? For example, here you can see some numbers which I mentioned in 2 columns. So here I have taken indirect function with sum function and AND operator. What it will do is, here जो bracket आप देख पा रहे होंगे, here I have mentioned B under quotation mark. It means कि ये सिर्फ B pick करेगा, followed by AND operator. AND operator दो चीज को join करता है. A19 में mention किया मैंने 21, so it will be like B21, then quotation mark colon B followed by AND operator and A20 आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे 24. So what this indirect function will do is, it will refer us from B21 to B24 like this. You can see the sum here 40. This is how you can use sum function with indirect and AND operator too. Let's move toward more complicated example. Here we have used name range. I hope आप सबको name range के बारे में पता होगा. So I'm not going to discuss it on this video. What I will do is, हमें इस example में जो students लिखे हैं इनकी age का एक average चाहिए. Simply हम क्या करते हैं, average function use करके we can get this 19.33. और मे बी जो अभी एक्सेल सीख रहे हैं वो इन तीनों को पहले सम करेंगे, देन इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, so आंसर will remain same 19.33. But suppose if it's a complicated question, you can use indirect function also. कैसे? What I will do is, पहले मैं इसे delete कर देता हूँ. I will simply name this column as age. नेम करने के लिए मैं फॉर्मूलास पे गया, डिफाइन नेम, मैंने इनको नेम कर दिया एज. ओके, सो हियर if I need average, so I have type average, then indirect function. Now I need to put my name range, that is age. So here I have written age. You can see the answer is still the same 19.33. एक मिस्टेक जो लोग जनरली इस पे करते हैं, B33 जो कि रेफर कर रहा है एज को, एंड एज मैंने इन्हें एज अ नेम रेंज डिफाइन किया है. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एज लिखूंगा तो वो यहाँ पे मुझे ये रेफरेंस एरर देगा, क्योंकि हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी मेरे B33 को जो है वो रेफर करेगा एक वैलिड रेफरेंस की तरफ. एज क्या है, मेरी नेम्ड रेंज है 12 to 14. That's
how this average function is working with indirect function. If in case कोई issue आता है, you can comment on this video.